अगर आप अच्छे से अपना मैसेज ही नहीं कन्वे कर पाओगे, सो हाउ यू विल बी एबल टू सेल योर प्रोडक्ट फर्स्ट? यू आर इन अ मीटिंग और या फिर आप फ्री हुए हो तभी की तभी एंड सडनली यू सी अ मैसेज फ्रॉम जोमेटो, किसका है तुमको इंतजार में हूं ना, आज तो फर्स्ट डे सैलरी का, कुछ तो ऑर्डर करो ना. वॉट एवर द प्रोडक्ट्स आर कमिंग टू केटर दिस ह्यूज मार्केट एंड इंडिया इज हैविंग लाइक इंडिया का यूथ पॉपुलेशन आई थिंक. So welcome Swati to the Startup Bazaar show. How are you? Thank you, Akash, for having me here. And I'm very good. I just want to know about your health. I hope you're doing good. I'm also doing good. So basically Swati, for the audience आप अपनी intro दे सकते हैं कि आप क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है? आकाश, मैं अभी पीआर में काम करती हूँ. सो हम्म. आई एम लाइक मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ न्यूज़पेपर्स में, सीईओज के लिए, फाउंडर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए. एज यू नो दैट स्टार्टअप इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एवरी डे, राइट? Right. Apart from that, it's like my job is to like define the brand image in front of the audience and other public. So basically through media we are doing that in PR. Apart from that, I love to write. I have a Instagram page. So right now I don't have that many followers because I cannot be active because of my work and other commitments. So it's like I love to write, I love to tell stories, and I love to engage with people in the stories. Personally and professionally, both I'm doing, like I'm creating and I'm giving voice to the brands. That's it. Basically stories आज के टाइम में नहीं बनी, ये बहुत पहले से चलती है. लैंग्वेज बनने से पहले भी स्टोरीज रही हैं अपने उस टाइम. Yeah, sure. Yeah. It's like कि if you will see ना, तो marketing storytelling is like very oldest tool of marketing. Right. अगर आप अच्छे से अपना मैसेज ही नहीं कन्वे कर पाओगे, सो हाउ यू विल बी एबल टू सेल योर प्रोडक्ट फर्स्ट, हाउ यू विल बी कम्युनिकेट योर आइडिया. सो अगर हम बात करें, यू कैन सी ममाअर्थ, ठीक है? सो दे आर अ ऑर्गेनिक ब्रांड एंड दे आर इनटू लाइक उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सस्टेनेबल होते हैं. Even they with their packages, what they do, they give the share of their packets. Like if you are using a bottle of them, ठीक है, so you will be like you will be giving that part, like you are growing one plant out of that. So that's how they communicate their messages. Like they have earned like 1.70 crores from their storytelling business using influencer marketing. We all see that how influencer marketing has grown tremendously in past 2 years, right? After the pandemic. So what it is a part of storytelling where like normal humans are telling you the story, right? Instead of a celebrity, like instead of what I can say, like instead of Virat Kohli coming to the picture, there's a general person coming who is saying that I have used this product, and it's like that I have used this product, and eventually I'm like I'm a fan of this product. So that creates a personal touch. That's what Personal. I'm trying to communicate. Like from storytelling, you can create a personal touch with your audience, which I think we all are seeking in the world of social media, right? तो So इवन कि अगर हम आज से 3000 साल या 4000 साल पहले चले जाएं पीछे इन द बैक, तो एक केवमैन को भी स्टोरी समझ में आती है कि वो भी स्टोरीज के थ्रू कम्युनिकेट करते थे, राइट? आज के टाइम में जो इतना सोशल मीडिया, लोग टेक्स्ट पढ़ते हैं, एबीसी पढ़ते हैं, तो वहां पे स्टोरी आज के टाइम में ह्यूमन नेचर के अंदर ही इंडल्ज्ड है. वो इंसान का नेचर ही ऐसा, उनको स्टोरी अच्छी लगती है. अगर आपके right. स्टार्टअप के अंदर स्टोरीज नहीं है, तो बेसिकली आप कुछ मिसिंग कर रहे हो अपने स्टार्टअप के अंदर. एक सिंपल डिस्ट्रक्टिव प्रोडक्ट बना रहे हो, राइट? तो स्टोरी टेलिंग एक बहुत बड़ा पार्ट होता है किसी भी स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए. Right, Akash. तो इसी क्वेश्चन को आगे रखते हैं, मैं व्हाट इज स्टोरी टेलिंग फॉर स्टार्टअप्स? है क्या स्टोरी टेलिंग बेसिकली? तो बेसिकली आकाश क्या है कि वी ऑल कैन सी कि कितने सारे स्टार्टअप्स इंडिया में भी आ रहे हैं. मतलब मैं वर्ल्ड की बात नहीं करूंगी, आई विल बी लाइक इंडिया के बारे में पहले बात करते हैं. सो वी नो कि बहुत सारे टेक स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स में स्टार्टअप्स आ रहे हैं, एफएमसीजी गुड्स में आ रहे हैं. सो अगर आप स्टोरी टेलिंग, मतलब अगर आप अपना आइडिया ही अच्छे से नहीं कम्युनिकेट कर पाओगे, आप बोल रहे हो कि केवमैन के टाइम पे द कंपटीशन इज वेरी लेस, तो आपका टारगेट ऑडियंस क्या होता था? बहुत छोटा होता था. Now you have a huge target audience to cater.
ठीक है, एंड यू नीड टू डिसाइड ऑल्सो कि अच्छा ठीक है, आपको यूथ को टारगेट करना है, या आपको जेन को टारगेट करना है, या आपको मिलेनियल्स को टारगेट करना है, राइट? So it's like first you need to decide what is your target audience, then you need to communicate, and it become a difficult task these days to communicate your message right. राइट। So basically what a startup can do in that case, your storytelling should be very clear, firstly on social media platforms, because as you can see that most of the startups are tech enabled these days. So if you are not able to like communicate your message properly on social media, how you will be able to get fundings, investment, which will you'll need to grow your business. Even the employees, like if I'm somebody, like LinkedIn is there, right? राइट। So if I'm somebody, I'll do, firstly agar meko kahin join karna hai, so what I'll do, I'll just go to their page, I'll see what they are doing, and they are post like अच्छा ठीक है, we are doing this for our employees, हमने ये activity किया, we have this like mental health and wellness day pe we have created a story, like we have created a press conference, right? And that particular organization did a story about it. So this is how you are connecting your employees, investors, external public, even your target audience. These days you cannot say like okay buy this product, like traditional marketing was like आपने एक प्रोडक्ट को जितना अच्छे से सर्कुलेट कर दिया, it will get sold, right? In villages we have seen that Lux has a very huge impact on people, मतलब क्योंकि वहां पे कंपटीशन इतना कम है कि you will see 2 or 3 soap options, right? पर आप मॉल में जाओगे तो there are 20, 20 राइट। even including your startup. So if you haven't crafted your message well, if you haven't delivered your story well, you won't be able to get that audience. So it's that critical to have a story behind everything. And obviously these days brands, founders, CEOs want to create a relationship with the audience, बेसिक because जोमेटो भी तो यही कर रहा है, राइट? जोमेटो एंड स्विगी। या जोमेटो का आप देखोगे, अभी जोमेटो का रिसेंटली एक पोस्ट था, आई हैव सीन शरबते खास. So their storytelling, the way of they tell stories through their ideas on social media posts. So I was like going through Instagram, I have seen their posts. So there was one picture जिसमें वो लोगों ने दिखाया हुआ था कि this is शरबते खास in rest of the India and शरबते खास in Delhi. So there was a fog out of it, that glass. There's राइट। a fog out of it because Delhi is quite combusted these days due to pollution and everything. So that's the power of storytelling, like how you communicate your message through your, and at the same time you're promoting your business, या ये right? एक्चुअली मेरे पास एक अच्छी एग्जांपल है, मैं देख रहा था इंस्टा पे, तो इनकी की रील थी जोमेटो वालों की। Okay. हमारी मैजिक की पेंसिल नहीं थी, हम अपने एक सीरियल आता था एक बच्चों वाला कि जो मैजिक पेन से आप कुछ भी बनाते थे तो वो बन जाता था। Yeah, shakalaka boom boom, I remember that. तो वही, तो उन्होंने एक रील बनाई थी जहाँ पे वो बर्गर बना रहे हैं, तो बर्गर बन के आ रहा है, राइट? वो जोमेटो का एक Right. डब्बा बना रहे हैं, इसके अंदर थोड़ा बिरयानी हो गई या कुछ हो गया, तो उन्होंने एक रील बनाई हुई थी, बड़ी अच्छी स्टोरी तरीके से कन्वे किया हुआ था। आई थिंक स्टार्टअप्स क्या है, ये एक हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एक स्टोरी होनी चाहिए। जैसे इस जोमेटो की मार्केटिंग टीम के अंदर डिफरेंट स्टोरी है, राइट? तो वो आज आपको एक मैसेज भी भेजेंगे, ईमेल भी भेजेंगे, तो वहां भी कुछ क्रिएटिव सा होगा, कुछ अच्छी स्टोरी होती है हाँ हाँ, कि right, right, right. आप नहीं आए ना, जा सिमरन जा, या कुछ ऐसा वो क्रिएटिव सा डालते हैं, डायलॉग्स वगैरह बना के। One day I receive a message from Zomato, किसका है ये, तुमको इंतजार में हूं ना. So ऐसा that's what they do. मतलब you are working throughout the day and you are in a meeting, और या फिर आप फ्री हुए हो तभी की तभी, and suddenly you see a message from Zomato, किसका है ये, तुमको इंतजार में हूं ना, आज तो फर्स्ट डे सैलरी का, कुछ तो ऑर्डर करो ना. हाँ So ये that kind of marketing they are having ki even if you're not thinking about it, with those pop-ups you will eventually end up buying and end up ordering something. यस Yeah, so it's like it's not directly they are telling you to buy something, like acha theek hai hamare is responsive, you should order, right? So राइट। that's storytelling is a creative form of like communicating your message. इन And then इसको एक वो बोल सकते हैं कि ब्रांड रिकॉल हो रहा है, कि वो yeah, बार-बार अपने ब्रांड के बारे में याद करा रही है, हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हमें भी यूज़ करो। हाँ मतलब, and not emphasizing it on directly, right? They are creating a story out of it. अच्छा why you should, like अच्छा ठीक है, आज वो आपकी लाइफ से मतलब रिलेट कर रहे हैं. स्टोरी टेलिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होना चाहिए, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, रिलेटिव होनी चाहिए. ठीक है, मतलब इफ यू आर राइटिंग लाइक
जो चीज आप फेस ही नहीं कर रहे हो. If you're writing about startup bazaar, right? If I'll speak about your venture only, so people wants to know what Akash faced starting this, right? So these days it's like you should have authentic story plus related story. So when Zomato send you such kind of pop-ups, so it's like you can relate. अच्छा हाँ, आज first day salary आ गई है. They're right. They're right about it. So that's the thing. You can like manipulation wala story I'm telling you. This, at the same time, they did the same thing there also. So everything they are coming with that is related to your daily experience. Right. So there is one more company. I think Brooms करके they have their page on Instagram. What they do? वो बहुत फेमस है वो तो. Yeah. So what they do? I have seen their videos because I am very active on social media, and I need to like decide social media strategies for my clients also. So what I do, like I keep a tap on it. So what is the name of that? Rooms करके है. So I just watch their stories. So the thing is, they have such relatable stories for the employees, for the people who are working in the office. So you can relate with them, right? You laugh. At the same time, you check कि okay, they are giving such a good content, how they are creating it. एंड ब्रांड रिकॉल हो रहा है साथ ही साथ. Yeah. Yes. That's how they work. वो हाँ, दैट्स हाउ दे वर्क. एंड मेरे उनका एक मीम भी याद आ रहा है. तो बेसिकली जब एचआर और एक एम्प्लॉय की सैलरी डिस्कशन होती है, तो जो हाँ. टीसी का अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कितनी धनराशि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ से लेके जाने के लिए. It's right. तो ऐसा कुछ लोग बनाते हैं. मे बी कि आई थिंक कि हम भी जो मीम्स वगैरह बनाते हैं, या ये काफी रिलेटेबल कंटेंट है किसी भी ब्रांड के लिए. कुछ ऐसा कुछ जो लोग रिलेटेबल हो, कुछ शेयरेबल हो, राइट. हम एक पोस्ट डाल दें कि व्हाट इज लाइक सी डे राउंड, वो इतना रिलेटेबल नहीं है, सबको नहीं फायदा. पर हम कुछ ऐसा बना के डाल दें जो सबको हंसाए भी और एजुकेट भी करे, तो वो काफी वायरल जाती हैं चीजें. The reason for that, Akash, I think हमारे मतलब what I told you कि पहले में और अब में difference क्या है. पहले we don't have access to social media channels. अगर होता भी था तो celebrities होते थे advertisements पे, right? So advertisement में there were stories जो हमें communicate हो रही थी. I must say कि बहुत सारे अच्छे advertisement भी थे. Like Amul is still having that legacy. कि उनका वही ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग है. मतलब वो सोशल मीडिया पे निर्मा इतना निर्मा निर्मा का भी अच्छा था वो. निर्मा का एड, हेमा जया, रेखा सुषमा, ऑब्वियसली. सो मतलब दे आर समथिंग व्हिच इज सिग्नेचर. ठीक है, those things cannot be changed. But now as the medium of communication are growing, storytelling has an important role to play. Right. So for social media it's like where did meme came from, right? Meme marketing kahan se aaya hai? It's because of social media and the Gen Z who is like busy on their phone at least twice 2 hours a day. Right. So there was a study about it ki how much time like an individual gives to their phone. So it's an average ki 1 घंटा तो हर कोई देता ही है, and Gen Z's on the phone, games. So to reach that audience, obviously we need to craft stories out of it, and they are more cautious about it also. See, अगर मैं अपने पापा से पूछूंगी अभी के टाइम पे, so what he'll tell me कि उनको कोई प्रोडक्ट दिखा, ठीक है, what he searches for कि अच्छा इस पे ऑफर था, I bring it. That's the thing, right? But now the generation which is coming, that is more cautious about brands message, what they are trying to communicate to their people. So basically if I'll talk, sustainability is very common these days, right? Like if a brand wants to run in the long run, so they need to cater the idea of sustainability into their business, no matter what they are doing. Like, are they growing trees, are they use that in packaging, or they are like recycling the products. H&M and Zara does that, right? So but how you are communicating it to people, अगर आप कर भी रहे हो, अगर आप नहीं बता रहे हो लोगों को, so there is no point of doing that thing, because how people will connect with you. Eventually किसी भी business का target क्या होता है? To get sales, right? And these days you cannot get it directly. You need to consider storytelling. Even if we were like talking about startups, right? So startups are these days are very active in storytelling. So what they are doing, they are using influencer marketing, which is quite cheaper than other marketing traditional marketing tools. And it is something like अगर मैं 10 influencers onboard करती हूँ अपने लिए, so what I'll do, like कि मैं आराम से 1.5
1.5 to 2 लाख लोगों तक पहुंच रही हूँ, इतना मैं एवरेज ऑन एन एवरेज आपको बता रही हूँ. और देयर आर स्टडीज जो शो करती है कि after seeing the influencers, people are buying the product, actually buying the product. And if I talk about my psychology also, so I'll see, acha theek hai, influencer is consuming that product, and that is a human, right? So it is tested, and I have trust the message they are communicating. I'm getting that product for myself also. So that's why I was giving you the example of Mamaearth. They did such huge influencer marketing or messaging unka ki people eventually bought their products just because of that thing only, for storytelling. बेसिकली ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर का ट्रस्ट लेवरेज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, अपनी स्टोरी टेलिंग के लिए, क्योंकि Obviously, ट्रस्ट करती है इन्फ्लुएंसर्स पे, एंड इन्फ्लुएंसर जब उनको वो कोई प्रोडक्ट जेन्युइनली प्रमोट करते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ पैसे के लिए प्रमोट कर रहे हैं, कुछ एक जेन्युइन रीजन होता है कि भाई, genuine reasons are there, right? राइट, पीपल ट्रस्ट करते हैं, उसमें से 100 से 100 पॉइंट मिलते हैं, ऑडियंस के भी सब लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, तो वो भी करती. कराएगा. और आप डायरेक्टली बोल भी नहीं रहे किसी को प्रोडक्ट के लिए, बट इवन आफ्टर दैट पीपल आर बाइंग योर प्रोडक्ट. तो इवन दैट्स हर द थिंग. समथिंग कि अभी जो हम बहुत टारगेट ऑडियंस की बातें कर रहे हैं, जैसे कि फेसबुक बहुत टारगेट ओरिएंटेड है, राइट, आपकी एज कितनी, सब डाटा है, तो अभी एक नई टेक्नोलॉजी भी टेस्ट हो रही है कि आपके सपनों में एड्स दिखाई जाया करेंगे, राइट. आपको आपके कॉन्शियस लेवल पे आपको सोशल मीडिया के थ्रू इतना ज्यादा इफेक्ट किया जाएगा कि आपको सपनों में भी उसी ब्रांड की एड्स आएंगी, ऐसा कोई टेस्ट हो रहा है, राइट. तो वो भी मे बी, आई डोंट नो कितना सच है झूठ है, बट एक पॉसिबिलिटी तो है, जिस तरफ हम जा रहे हैं एआई की तरफ या कुछ भी, तो शायद कुछ हो सकता है, राइट. Yes, we are moving in toward the world of metaverse, we can say. आपने देखा होगा Kyra is the influencer who came recently in metaverse, right? तो मतलब the generation, the Gen Z, basically all the brands these days are targeting Gen Z and millennials because they have great purchasing power. They are on the social media every time. एवरी टाइम. They have access to the technology and phones. So whatever the products are coming to cater this huge market. And India is having, like, India ka youth population, I think it's 40% of the world's youth population. I'm not sure about the statistics, but yes, it's around that we have the major youth population these days. मेजर. Okay, so the startups which are like जो इंडिया में born कर रहे हैं, so they are for that only. So metaverse has that power कि आप वो they can connect you with this thing. We have like virtual influencers और ये सारा, so they have that kind of power. Even they are also using storytelling to promote their product. Like if you go to the page of Kyra on Instagram, you can see that she's uploading pictures. She's using, like, वो बाहर जा रही है, वो metaverse में travel कर रही है obviously, but she's telling a story out of it, that she visited, okay, Paris she visited, तो उससे related story she's sharing. So that's I think the whole business is running towards storytelling. तो अभी मेरे को ऐड भी ज्यादा आई, अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप, उसके अंदर बुमराह जब वो फ्लावर फेंकता है, तो आपने देखी होगी स्टोरी की, अच्छा हुआ मैं एक बॉलर बना, ऐसे करके काफी अच्छी स्टोरी, आपने शायद वर्ल्ड कप देखते हैं. Maybe I would have वो skipped ड्रीम it. 11 के काफी सीक्वेंस है, एड्स हैं, ऋषभ पंत को भी हाँ. उन्होंने लाइक बुलाया है, मेरे को पूरी एड्स याद नहीं है, वो बुमराह वाली याद है, वो फ्लावर फेंकता है उसका, तो वो उसके चेहरे पर पड़ जाता है कि अच्छा हुआ बॉलर बना, तो वो ऐसे स्टोरी दिखाते हैं कि भाई अच्छा हुआ, ऐसा ऐसा नहीं हुआ, तो वो काफी अच्छी स्टोरी टेलिंग है, एंड फन भी है. Right. Actually, 5 years ago, I just like flipped the page for this. There was a campaign by Amazon, "Mom, be a girl again." If you remember, there was a guy who is traveling to some another country. तो वो क्या करते हैं, अपनी मॉम को एक DSLR गिफ्ट करते हैं. ओके. So there's a beautiful story out of it. I just remembered it now. It was like the meaning behind that. They were trying to communicate कि okay, you were different before you got married and I got born. This is something which my father told me कि आप शादी से पहले ऐसी नहीं थी. Then you are old now and I'll not be here like for some time. But now I want कि you should live your life. You should be that girl again. So it was a very beautiful touched campaign because see what they were trying to communicate. Ki most of the girls, even the women, when they enter into marriage and then they have kids, right?
So they forget to live their own life because of the responsibility, because of the workload. If they are working, if they are houses, even then मतलब they have a responsibility all the time, right? So they somehow forget कि अच्छा यार अपनी life तो नहीं है. So that's how Amazon beautifully recall that thing ki acha mom you should be a girl again. So it was a beautiful campaign, beautiful storytelling behind it ki kaise she like changed. She again started living her life. She was a photographer before her marriage. So that's how beautiful you can convey your idea. And see, it was a box of Amazon in which the DSLR was there. So that's how you are promoting your brand these days. Indirectly, right? No directly, but indirectly. No direct selling, nobody wants that. Right. You can ask for a question, you can ask for a call to action, but you cannot ask कि अच्छा please मेरा product ले लो, please मेरा product ले लो, right? ये वाला नहीं है, because traditionally marketing का product price placement वाला जो scene था, so it has eventually changed due to social media and changing preferences of the people and due to the rising competition in the market. अभी एक गूगल की एड भी तो थी, गूगल जो वो पार्टीशन के वक्त एक काफी 80 इयर्स के एक ओल्ड इंसान को जब वो एक अपने दोस्त से मिलते हैं, तो बड़ी मेरे को एड याद नहीं है, बट वो काफी इमोशनल थी. मैं खुद रोया था उस एड को देख के, आंखें वो इमोशनल हो जाते हैं कि हाँ यार उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से सेटअप किया था. इन द एंड उन्होंने कुछ प्रमोशन नहीं किया, सिंपल गूगल लिख दिया लास्ट में. वो उनके एक गूगल मैप के थ्रू वो मिलते That's how storytelling has हैं. that power कि it can encourage people, it can motivate people, it can bring a life to your brand. And most importantly, अगर आप Zomato देखोगे, Zomato has a loyalty of its customers. Right. Those people who want to use Zomato, because Zomato is so much linked and attached to it कि they don't want to use Swiggy. So I'm not like defaming a brand here, but it's something what you are doing on the ground. You gave me an example of Zomato, but अगर हम किसी को भी layman language में Zomato का example देते हैं, तो they will say कि हाँ यार उनकी stories बहुत relatable होती है. And see, that's how you're growing your audience base also. अगर कुछ relatable है, if your story is relatable and it's authentic, obviously you will going to share it on social media with your friends. They will share it with somebody else. See how much brand awareness you are getting from it. बेसिकली हमने एक मीम अपलोड किया था रिसेंटली, लास्ट वीक आई गेस, तो वो बड़ा वायरल गया. वो अराउंड उसको 150 के आसपास व्यूज वगैरह मिले इंस्टाग्राम पर. तो उसको शेयर अराउंड 3000 4000 शेयर मिले आई गेस. तो मे बी क्योंकि अगर हम सिंपल कंटेंट बनाते हैं या पॉडकास्ट की बात भी करें, इसको इतने शेयर्स नहीं मिलते, इतने कुछ चीज को मिलते हैं जो लोग आपस में रिलेट कर पाते हैं, और उसी की वजह से ब्रांड का जो विजिबिलिटी है बहुत इंक्रीज हो जाती है. Right, that's the point. मतलब ये storytelling is not about कि we are talking about कि ठीक है, we are talking a story of this thing like पहले चल रहा है movies में story दिखा रहे हैं. पहले messaging का main purpose ही यही था, right? Messaging and movies and advertisement. These days you have short films, short videos, YouTube videos, YouTube advertisement, this thing LinkedIn, plus Instagram, Facebook. The process is same. You are telling the story, but the platform is different. Your target audience must be different. You are using a different medium to tell the story. Right. तो अभी हमने काफी बातें कर ली बेनिफिट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग के ऊपर कि ठीक है ये स्टोरीज मैंने शेयर करी, बट एज एन बिगिनर कि मैं अभी स्टार्टअप कर रहा हूँ और मुझे ये पॉडकास्ट सुनकर अच्छा लग रहा है, ठीक है मैं भी ये काम करना चाहता हूँ, तो हाउ डू आई स्टार्ट, मतलब कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से सीखना शुरू करूँ, फिर कैसे इम्प्लीमेंट करूँ, तो उसके बारे में थोड़ा. I have a question for you. Like, how did you came up with the idea of starting a podcast? इट वाज बेसिकली एक अंदर से आया था. मुझको काफी पहले मैं पॉडकास्ट किया करता था जब कॉलेज के अंदर था, तो एक सोलो पॉडकास्ट किया करता था, राइट. देन आई स्टार्टअप बाजार. कुछ साल बाद एक जब हमें एक ट्रस्ट जनरेट करना पड़ता है बिजनेस के अंदर, राइट, तो एक बात थी कि हमें एक नॉलेज भी शेयर करनी साथ साथ के अंदर. हमें कुछ ऐसा चाहिए था यार, हमें मार्केटिंग के पे पैसा ना डालना पड़े, हमारे ब्रांड अवेयरनेस भी बढ़ जाए, राइट. तो हमने सोचा कि यार फेसबुक एड्स, गूगल एड्स काफी एक्सपेंसिव है, वी आर न्यू स्टार्टअप है ना, तो हम नहीं कर सकते. तो उस टाइम पे इतना नहीं था, काफी एक्सपेंसिव है. तो वी थॉट कि कुछ ऐसा क्या करें कि एक तो हमारा जो गोल था कि एजुकेशन शेयर करने का वो करते रहे, राइट, साथ में विद टाइम वो चीज इंक्रीज करे. तो मैंने सोचा कि पॉडकास्ट करते हैं. अब मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता है. अब मेरे को
ऐसे बात करने में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता स्टार्टिंग के अंदर। तो उस टाइम पे आई थॉट कि यार कैसे किया जाए, क्योंकि मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं Being an introvert is it's है। very difficult to वेरी start a business like this. राइट। Very tough. आई थॉट कि चलो ये अनकंफर्टेबल स्टफ है और यहीं से ग्रोथ मिलेगी, करते हैं ट्राई। एंड दिल मेरा धड़कता रहता था अभी भी, कभी कभी जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ, राइट, मेरे को थोड़ा सा वो होता है कि यार मैं इंट्रोवर्ट हूँ, थोड़ा बीट हार्ट बीट करता है। बट स्टिल आई थॉट कि यार यही तो है अनकंफर्टेबल जोन। कंफर्टेबल में तो बैठा हूँ अपने घर में आराम से, क्या करना है करके। देन वी Right. स्टार्टेड पॉडकास्ट। ठीक है, कोई नहीं, झेल लेंगे थोड़ा, सीखेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा। और हमें नहीं पता था उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा क्रिएट होगा। हमने तो सिंपल एक पॉडकास्ट शुरू किया था, इन्वेस्टर को बुलाया, ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर करे, क्योंकि हमारे टाइम उस इन्वेस्टर की काफी ऑडियंस थी जो फंडिंग चाहते थे, तो हमने वहां से शुरू किया, राइट। तो धीरे धीरे बड़ा होता गया, और लोगों के क्वेश्चन आने लगे कि यार ये कैसे करें, ये कैसे करें। देन वी स्टार्टेड दिस, एंड वही जब एक एक आइडिया होता है ना, तो धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। अभी हम इंट्रोवर्ट ही हूँ, भी मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ज्यादा बदला नहीं है, बट जस्ट कि वो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपने इतने पॉडकास्ट पहले कर लिए हैं, तो अभी कोई दिक्कत नहीं आती है, राइट। तो ये थी मेरी स्टोरी। See, you told me a story on yourself that you are an introvert and you are running a podcast. राइट। So don't you want that your audience should know it? So that's the power of storytelling, right? So what elements I gather from your story, it's like it's a motivational one first of all, because there are like maybe there will be millions of people who are introvert, right? राइट। In the beginning, and this is not with you, Akash. This is with everyone. They feel a little bit anxious because मेरे को भी ऐसा लगता था कि after that I deal with the clients every day. So every day is like on screen for me. I did theater in my past. So I did nukkad nataks and everything. So before every performance, before everything, I feel like यार शायद नहीं हो पाएगा या कुछ भी, मतलब it's a normal feeling. It happens with everyone. So being an introvert, it's a huge step to take, that you have taken ki theek hai, I'll start my podcast, and it's a good one. And the story behind it, the only advice I give to startup founders, they are doing the business, but this is my personal experience, but they don't know how to sell it to the people. See, agar aap founder ho, you are founder of Startup Bazaar, right? So don't you think that people should know about you? People फर्स्ट should be स्टोरी। connected with you personally. They should see personal branding is a very huge thing. And if you want that thing to, you have to connect people with you. वो कनेक्ट कैसे करेंगे, वो आप वो पर्सनल टच, वो कनेक्ट कैसे लेके आओगे? मे बी आई थिंक या तो आपको, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है आज के टाइम में, तो ये है, इतना कंपटीशन है, आप एक डॉक्यूमेंट के पीछे बैठ के कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं कि आप एक लिख के ऐड चला रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं। या तो आपके कंटेंट के अंदर बहुत पावर होनी चाहिए जो रिटर्न के अंदर, या फिर आपको अपनी शक्ल दिखा के, फेस शो करके दुनिया के सामने आना पड़ेगा। नॉट जस्ट यू कि आप एक टीम हायर कर सकते हैं जो स्टोरी टेल करे, राइट। मे बी कुछ आपकी, क्योंकि अगर एज ए पर्सनल ब्रांडिंग की बात करें तो वो खुद को ही करनी पड़ेगी। जैसे हम इलॉन मस्क की बात करते हैं, तो हर किसी को पता है उसने स्पेस एक्स के लिए बहुत कुछ किया, राइट। ही स्ट्रगल अ लॉट। उसके 2008 के अंदर वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया था, राइट। तो उसके काफी रॉकेट्स फेल हुए, तो लोग ने वहां से उसको पिकअप किया 2008-7 के अंदर कि ठीक है यार, ये बंदा कुछ बड़ा कर रहा है। तो उसके स्ट्रगल्स को लोग जानते हैं, उसके अचीवमेंट्स को लोग जानते हैं। तो वहां से जो भी उसका कनेक्ट बढ़ा, आज वो दुनिया का रिचेस्ट मैन है। अभी तो ट्विटर के साथ भी उसका हो गया है, तो उसने ट्विटर भी खरीद लिया है। एंड But even after that, you can see his popularity, the way he connects with people. So matlab he's a part of every meme which is shared on social media about him at Twitter. He yesterday posted something on Twitter that it's okay, you are here, but now pay $8 or 800 it is. नहीं, ओनली $8 $8, right? But now pay $8. You have to pay $8. ठीक है, जो भी चल रहा है, but $8 आप मेरे को दो verified कराने के लिए to have a blue tick. So see that person who must be very busy, but he's not. He's adding that personal touch in everything he does. So that's quite important. इमोशन कर रहा है वो। Yeah. So storytelling is about that you should connect with people with your emotions. इमोशंस। First of all, for every startup founder, matlab they don't know how to share your brand ideas. See, I have came across with people, so I'm curious about startups.
So I'm enthusiastic. I asked them, अच्छा, how did you start? So that's my curiosity कि यार मेरे को बताओ तो सही, तुमने शुरू कैसे किया था, कम से कम मुझे पता तो लगे. तो वो लोग बताते हैं यार हमने तो ऐसे ऐसे शुरू कर दिए थे. सो बीइंग अ स्टोरी टेलर, व्हाट आई गैदर आइडियाज फ्रॉम इट कि यार हम ऐसे कर सकते हैं, लोगों को पता होना चाहिए हाउ यू स्टार्टेड. मतलब इट विल बी अ मोटिवेशनल फॉर योर फेटर्निटी कि कितने सारे लोग आप लोगों को फॉलो करते होंगे, कितने सारे लोग आप लोगों को फॉलो करना चाहते होंगे, और ये स्टोरी सुन के कितने सारे लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते होंगे. So it's not about business only, it's about you're creating and you're giving a meaning to the society. सोसाइटी. राइट. सो अगर मैं आपके साथ आज किसी फाउंडर का मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करती हूँ, सो समटाइम्स इट्स लाइक आई आल्सो गेट मोटिवेटेड कि अच्छा ठीक है, मेरे को भी कुछ अपना स्टार्ट करना है. इवन योर ब्रांड, अगर आपने, अब आपके इमोशन जुड़े हुए हैं स्टार्टअप बाजार से, राइट? डेफिनेटली. So you are the best person to describe it, and how you will going to describe it through storytelling. स्टोरीज. So that should be everywhere. That one statement should be everywhere कि अच्छा ठीक है, why Akash started this. पहले you need to resolve why you started this, then the challenges you faced, then how you overcame them. So because that is realistic, then eventually your audience will grow. They will like you for what you are. Because क्या होता है, if you have a team of storytellers, they can give you they can post the general content. Right. That's what they can do, but there should be a personal touch to it, because I am not into your mind every time, right? So what I feel, you should never afraid to share what is in your mind. But be careful about the platform you are using, because LinkedIn पे आप you cannot go एकदम से blunt. The language should be appropriate for sharing your ideas. Yeah. Where Instagram has a little bit of informal audience, you can share. Yeah, you can share like informally. There you can use meme marketing. There you can use general ways of conversation. There you can use whatever you want. I think they give you that freedom. राइट नाउ अभी तो लिंक्डइन के ऊपर भी वो फनी वाला इमोजी आ गया है. Yeah, funny and support this. हाँ, फनी एंड सपोर्ट दिस. तो मे बी अभी भी लिंक्डइन भी ट्राई कर रहा है मीम मार्केटिंग के थ्रू या कुछ ऐसा, Yeah. क्योंकि वो ट्रेंड करता है. तो स्वाति, हमने बातें करी पर्सनल ब्रांड के ऊपर, इलॉन मस्क की बातें करी, या खुद की जो आपके चैलेंजेस आपने फेस करे एज एन स्टार्टअप बनाते वक्त, राइट? तो ठीक है, मेरे पास चैलेंजेस हैं. जैसे पर्सनल की बात करूं तो मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ. मैंने फर्स्ट ईयर्स अपने स्टार्टअप जर्नी के स्ट्रगल ही किया है, एंड कि कोई कुछ खास तो हो नहीं रहता, राइट? तो वहां पे सबको मनाना होता था कि कुछ काम का कर रहा हूँ, कुछ काम का कर रहा हूँ, राइट? तो वो चीजें मैं शेयर कहाँ पे करूँ? कौन सा प्लेटफॉर्म है कि लिंक्डइन अच्छा है मेरे पर्सनल ब्रांड के लिए, या ट्विटर अच्छा है, या इंस्टाग्राम अच्छा है? कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँ, दुनिया को बताऊं? Akash, for that you need to decide what is your target audience. So these days, what I found being a founder of anything, the best platform you can connect on is LinkedIn. It gives you immense power to share your career growth, your career challenges, your career trajectory. Even अगर आप ये बोलोगे कि it's like it's your story of a co-founder, so that community will understand you. Even on YouTube, you can share your experiences and everything, but LinkedIn will give you the right audience to hear it. You will get better connections from there. You'll get people who will support you in this journey. मैंने तो बेस्ट थिंग लिंक्डइन की ये भी है कि अगर आप किसी की पिक्चर लाइक करते हैं, तो जो लोग उस इंसान को फॉलो करें उनको भी मैसेज आता है कि दिस गाय Right. This is the strength of LinkedIn. स्ट्रेंथ ऑफ लिंक्डइन. तो आपने लाइक किया है, पोटेंशियल है. हाँ जी. हाँ, आपने लाइक किया एंड पीपल कैन सी, योर कनेक्शंस कैन सी, अच्छा आपने ये चीज लाइक किया. सो इट गिव्स यू क्रॉस ग्रोथ, लाइक पीपल कैन सी योर प्रोफाइल, व्यू योर प्रोफाइल, and this is the platform where you can grow your business. You are presently into the podcast business, so what will be your target audience? Obviously you want to invite more guests to your podcast, right? And even if you are like planning to expand it to a studio or something, you'll need investment for that. So for that purpose you can go to the LinkedIn. People will connect with you and they'll see कि अच्छा ठीक है, you were, अगर आप लोगों को बताओगे नहीं तो उनको पता नहीं लगेगा, right? पता नहीं So लगेगा. if you had a podcast with somebody, like अच्छा आपने world record create किया, right? Right. So I don't know whether it's on your LinkedIn or not.
but it should be अभी there. अभी हमने पॉडकास्ट भी It नहीं should be, किया। it should be there, right? So whenever you are uploading or you are doing something, that should be on your LinkedIn. Because when I was like, I was looking for the podcast, yeah, when I was looking for the right platform for anything, and even for a client also, even before the interview also, what I do, I just go to the LinkedIn, check the person, what is he doing. That's because that expresses you, your professional life. So it should be there on LinkedIn. It should be it's like there is a theory about it. Psychologists say that ki when you attach a emotion, or like when you try to connect people with your personal story, there is a empathy connected to it. Matlab, you release the dopamine in others mind and they feel connected with you. So if you will be like posting the flat stories, they won't be able to connect. But how you face the challenges and how you grow out of it, people will all people will want to like be know more about you. They will be curious about you, that how you did it, because you know that many of the people faces challenges. It's not us, it's not you, it's not me, it's अभी not one startup. राइट। So it should be there on your platforms. नहीं गॉट इट कि क्योंकि लिंक्डइन ही अच्छा है सबसे। मैंने भी काफी यूज करा है लिंक्डइन, आई नो कि वो बहुत पावरफुल है। एंड हमने पॉडकास्ट के प्रमोशन के लिए भी यूज करा था, वहां पे हमारा एक पॉडकास्ट भी वायरल चला गया था। तो काफी, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो सारी की सारी स्टार्टअप्स वाले नहीं है, ये नहीं है जो लोग ज्यादा स्टार्टअप करना चाहते हैं या कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो तीनों की audience है। तो वो सारी लिंक्डइन भी ऊपर रहती है हमेशा। एंड एक इस पॉडकास्ट का क्लोजिंग नोट आप देना चाहेंगे कुछ? Yes, I just want to tell people ki always have a relatability in your story, authenticity. That shouldn't be like, people shouldn't feel about it ki ye yaar self crafted hai, this is not true, right? So if something you are facing, you have faced, that should be based on facts. Like, okay, that's your personal story. Out of it, there should be novelty attached to it. And always and never forget your target audience. For every startup founder, I'm saying ki never forget your target audience, and try to connect as much as possible, and try to be in the media as much as possible, because people wants to know your story, राइट। right? And it will eventually lead you to the brand growth. It will give you the right business, right people, right set of employees. That will give you growth. Yeah. थैंक यू स्वाति। एंड Thank you, Akash. Thanks for having me here. हाँ, मेरा भी एक क्लोजिंग नोट है। एंड आई वाज लिसनिंग टू अ स्टोरी जो हमने काफी बचपन में पढ़ी होती है, कि एक कछुए और खरगोश की रेस लगती है, राइट? तो मैंने एक शॉर्ट देखी है यूट्यूब के ऊपर, तो बड़ा मेरे को अच्छा मैसेज लगा स्टोरी टेलिंग के ऊपर भी, कि उन्होंने क्या किया कि चलो आपको हम फिर से वहां पे लेके चलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक कछुए एक खरगोश की रेस हुई। आपको पता है कि भाई कछुआ स्लो एंड स्टडी जीत जीत गया रेस को। आप जिंदगी में हमेशा अपने पेस बनाए रखे, रुकिए मत, धीरे धीरे चलते आप जीत जाएंगे, राइट? ये सबने सुनी है। इसका एक सेकंड पार्ट भी है कि खरगोश आया कछुए के पास फिर से, कहता है एक री रेस करते हैं, फिर से एक रेस करते हैं। Okay. तो खरगोश ने और कछुआ मान गया, उन्होंने रेस शुरू कर दी। एंड खरगोश ने अपनी गलतियों को पहचाना कि अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं रेस खत्म करने के बाद ही रुकूंगा। एंड Okay. रेस जीत गया, राइट? तो उसने अपनी गलतियों से सीखा लाइफ के अंदर। देन अगेन अब कछुए को हुआ कि यार अब तीसरी रेस लगाते हैं, ठीक है? एंड इस टाइम रूट मैं तय करूंगा इस रेस का भी, कहाँ से रूट होके जाएगा। खरगोश बोला ठीक है यार कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। देन कछुए ने क्या किया, वो जो ट्रैक था वो पानी के अंदर से ले गया, नदी के बीच में से। अब खरगोश नदी के किनारे आ गया, वहां पे रुक गया, जा नहीं सकता था, काफी बड़ी नदी थी। कछुआ धीरे धीरे तैर के चला गया, राइट? तो ये थर्ड स्टोरी है कि अपनी स्ट्रेंथ को जानो, कि आपकी स्ट्रेंथ है क्या, राइट? एंड देन द फोर्थ क्या हुआ, अब खरगोश फिर से आया। खरगोश ने बोला कि यार फिर से रीरेस करते हैं, ट्रैक वही रहेगा, हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ को यूज करेंगे। कैसे? कि जब जमीन है तो तुम मेरे ऊपर बैठ जाइयो, ठीक है? मैं भाग जैसे तेज चला जाऊंगा तो ऊपर तू भी साथ में तेज चलेगा। जब पानी आ गया मैं तेरे ऊपर बैठ जाऊंगा, हम नदी क्रॉस कर जाएंगे। तो अपनी दोनों लोगों की स्ट्रेंथ को जानो, आपकी टीम की स्ट्रेंथ को जानो, Right, 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 right. यूज करो एंड लाइफ में आगे बढ़ो। यही ये Right. हाँ। Even if you are growing out of your weaknesses, this is another way to see the things. Like, we all have something in ourselves, we all have set of insecurities, failures, challenges every day we are facing, right? राइट So we should, the main thing is we should grow out of them, and we should inspire others. राइट Even for brands also,
But one thing I want to comment again, that your brand should never lose its newness. Whatever message you are communicating, that shouldn't be old one. That can be have ethical old ethics, but that shouldn't be like वो एक घिसी पिटी स्टोरी होती है ना, repetitive it's going on and people are getting bored out of it. So there should be a newness to it. Like हम देखते हैं ना, एक मूवी होती है, मूवी का सीक्वल होता है, ठीक है, तो some people use a different dynamic to it, new characters, new things, then people will obviously watch it. But कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे सेम प्लॉट था, स्टोरी इस बार और भी वो और ज्यादा घिसी पिटी हो गई है, लाइक वी कैन से कहानी घर घर की, दे ड्रैग द स्टोरी अ लॉट. सो मतलब वही मीर को बार बार मरते हुए देख रहे हो, मीर को जीते हुए देख रहे हो, तो पीपल विल नॉट लाइक इट. पीपल लाइक न्यूनेस. अगर आप न्यू टूल्स, न्यू थिंग्स, न्यू चीजें अटैच करोगे तो देन पीपल विल ऑब्वियसली लाइक इट. सो इट गोज विद योर ब्रांड ऑल्सो. ट्राई टू एड सम newness in the message you communicate. Apart from that, जो आपके brand users हैं, मतलब basically जो आपके users हैं, customers हैं, they are the best storytellers. ये तो है. Word of mouth marketing से हम बोलते हैं. Word of mouth is everything. And in the era of social media, you have Google reviews, you have social media platforms. So make sure that your people are saying good things about you, because customer is literally God for your business. Whether it's B2B, whether it's B2C, whatever it is, but customer should always be the priority. So it should be like, वो आपके बारे में, अगर Zomato का मैं देखती हूँ, Zomato के आप comment section भी देखोगे तो people relate with it, they enjoy the part of it. They start conversation, अपनी खुद की स्टोरी शुरू कर लेते हैं. Right, वो खुद की स्टोरी शेयर करने लगते हैं. So you should be always energetic, newness, novelty, authenticity, that should be there for every story. Even अगर हम लोग, story can create narratives also, if I can say. ये तो है. So it's like कि कोई भी brand आज तक अगर brand बना है, if we can talk about Star Wars, right? So Star Wars is a brand just because the person who was attached to it, he was fan of cars, ठीक है, and he was like fan of cartoons. So he mixed both the things and he created a character out of it. So that's how you grow. You should mix your interest, your experience, and your lovings to create a powerful brand, and just tell the story to the world and people will love it. Love it. Yeah. Thank you, Swati. And the guys, हमने क्वेश्चन पूछा था कि how to learn storytelling, है ना, उसका आंसर ये भी है कि आप इनकी प्रोफाइल पे जा सकते हैं, नीचे लिंक्डइन का लिंक होगा, तो वहां पे they will teach you, वहां पे काफी कुछ शेयर करते हैं स्टोरी टेलिंग के अकॉर्डिंग, तो हम चेक कर सकते हैं, राइट. तो वहां पे जाके भी आप सीख सकते हैं, बाकी यूट्यूब वगैरह वहां से भी सीख सकते हैं. राइट. आपने एक बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट दिया हमें. ये ऐसा पॉडकास्ट है कि हर स्टार्टअप को हेल्प करेगा इन फ्यूचर. थैंक यू. हेल्प करेगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच आकाश. थैंक यू.